I'm a photographer traveling around the world by bicycle. This time I'm cycling in South Punjab. My name is Kamran Ali. Photography is an important part of my travels. It helps me document my experiences from the road. Traveling, I often use my phone to capture candid moments and share them with the world. These photos are precious memories. After all, life is nothing but a collection of memories. तिवगी जिंदा मन ईपे में यक रूची जिंदगी नकुता कि होदा मन वता चक्का सकना बुत्तगा जिंदगी मुदाम हमें वड़े चीज़ा निरंत पदंगोने चीज़ों के रोज पेसर मना realme नेमा ची कैंपेन दस कप्त के मैं बलूचिस्तान सफ़रे बिकना और सफ़र तहा आहानी नू के फ़ोन realme 9 Pro Plus चक्का से गया चुनाहा ये कैंपेन तहा बलूचिस्तान मर्दुमानी रंग और रमज़ान माह जरश्क पेशदार गया मनवती साइकिल जोर तो देम पडन्ने रहा तक बुत्ता हमी के रुद्रत के साथ मंडन्ना दरकप्ता हमी रंगा रुद्रत की नीलने रंग तहा ई फोन रंग बदल बुआ अम्बुत सोहरे रिफ्लेक्शन तहा मटबू सफ़र द्राजा भले मन मुहकमता सफ़र जोंजाना बरी बरी कूहू गरो ग्याबान बरी बरी त्याबी दबा निश्तो जिंदगी आदि के रंग मारता ई सफ़र तहा मना बाज जा चार गया भले चतुर संगीश मना गो नूक इंकारस्ता हवार भो गया दामा आहानी जीड़ के बोंसे हाँ सरबेबा ओछा दुर्संगीश कैप्चरिंग द लाइट मन हमें मीत के तहा रमज़ान वशियाँ हवार बुत्ता जा जाए सरा उश्तगो अति वास्ता सऊर दब्बो जो शुआ जिंदे वश्तरी एक्सपीरियंस आनी तहावारा अल्लाहु अकबर
मन ई मर्दमानी हर रूची ज़िंदगी ऑब्जर्व कना को था ओई मर्दमानी मेहमान नवाजी पम्मा शरफिया स्पार्क हर दो इनानी तहा जिंदग मानी कुदरत भी या कि सिविलाइजेशन तरा तहना अमी कद्दस अरबुगी कि तो बुरुए बेचारे ओ कैप्चर बिकने त्योगी सफर तहा यक चीज़ सा काम आ द लाइट थ्रो द लेंस ऑफ रियलमी 9 Pro Plus. Realme, dare to leap. Hello everyone, my name is JJ. I'm thrilled to be here today to share our newest addition to the Realme number series, the Realme 9 Pro Plus. So, let's take a look at the main camera. We hear every day from our Realme fans that one of our favorite features on the Realme 8 Pro is the camera. And we want to make the camera better with 9 Pro Plus. With Realme 8 Pro, we have reimagined what a main camera could be in terms of resolution. As our camera engineers came together for 9 Pro Plus, the main question we asked ourselves was, what if a smartphone camera could capture excellent low-light photos? This idea is not exactly new. We have seen a lot of premium flagship smartphones able to take low-light photos really well. However, we think such capabilities shouldn't be reserved only to the premium flagships. So we set out to design a camera that lets you capture your favorite moments in a whole new light. Hence the slogan for the 9 Pro Plus, Capture the Light. With that in mind, today I'm excited to introduce a new imaging technology on the main camera that is generations ahead of other smartphones in its class. We are calling it ProLight Imaging Technology. So what does it do? Well, let's take a look at a typical image shot at night first. This is a typical photo in a low light setting, which is very blurry and grainy, making the photo pretty much unusable. These grains are what we call image noise, and we want to solve that with 9 Pro Plus. Our camera engineers at Realme have identified a few common factors that can affect the level of noise and clarity of your photos. They are small camera sensor, lighting conditions, and motion shake. This is where our ProLight imaging technology comes in. It is a combination of software and hardware working together seamlessly. The goal is to let you capture beautiful photos in any situation. ProLight imaging technology achieves this by intelligently utilizing the large imaging sensor, pairing it with advanced digital noise reduction algorithms and dual stabilization system. So, let's start with the image sensor. A bigger image sensor means more light intake and better photos. This is why we have packed 9 Pro Plus with a flagship Sony IMX766 sensor. This is a very popular camera sensor that is in a lot of flagship smartphones, which typically cost between $600 and $900. In fact, there are 15 other mainstream flagships that use a Sony IMX766 imaging sensor as part of their camera system. Why is that so, you might ask? Well, it is because of the sensor size. Perfect for low-light photography, this massive 1/1.56-inch sensor makes it one of the biggest in its class. Compared it with the iPhone 13, it is a whopping 45% more light intake. And thanks to the pixel binning technology on Sony IMX766, it is able to process incoming data with 4 pixels combined into one big pixel. This increases the pixel size from 1 to 2 microns, turning them into super pixels. Effectively increase the overall light intake by 50%. Having more light intake is just half the story.
In low-light photography, sensor typically needs more time to capture light, so it is very easy to get blurry images. And this blurriness isn't caused by the sensor, it is caused by handshake. As part of ProLight imaging technology, the main camera comes with both optical image stabilization for photos and electronic image stabilization for videos. With these images, you might already see the differences in terms of quality and clarity. It becomes especially clear when you zoom in on the details. With optical image stabilization, the camera lens can now compensate for any unwanted movements, giving you better clarity and sharpness. But with smartphones, you are limited to the physical size of the camera sensor. So we turn to computational photography to further enhance the sensor's capabilities to improve the level of image noise. Our ProLight imaging technology comes integrated with AI noise reduction engine 3.0, reducing noise much faster and more accurately. When you press the shutter, 9 Pro Plus takes a burst of several photos. The AI noise reduction engine employs an imaging averaging algorithm to find the differences and remove as much digital noise as possible. But because digital noise comes in different shapes and sizes, the noise reduction engine uses deep learning to identify and remove these shapes. The end result? Beautifully clear low-light photos with far less digital noise. But a picture is worth 1,000 words. So let's take a look at how clean and clear the image look as compared to our competitors. If you take a closer look, you can see how better the images are. No matter how big you make the images, photos taken on 9 Pro Plus will look great. So this is the ProLight imaging technology powering the main camera. Now we can capture every moment beautifully, no matter how difficult the lighting condition is. Here are some sample snaps took with 9 Pro Plus. Every shots are brilliantly exposed with sharp and clear details, along with balanced saturation and contrast. In short, the 9 Pro Plus features the best camera in the history of realme number series. Powered by the all-new ProLight imaging technology, 9 Pro Plus can go head-to-head with flagship devices when it comes to low-light camera performance. We have also made a video to show you the engineering behind the ProLight imaging technology. Light. It is the key to photography, but also the biggest challenge for our camera. When there's almost no light to work with, how do you capture it? How do you process it? We asked photographers from all around the world to help us refine the camera system for the Realme 9 Pro Plus with our 12 Hours of Night campaign. Smartphone cameras are usually very capable in well-lit situations, while the low-light scenarios remain a major challenge. What is truly important is how much light is transmitted through lens and how the camera is processing the image afterwards. Stigma gadget yang highlight fotografi itu kebanyakan infoin numbers of megapixel yang mereka punya. Kalau buat gua, megapiksel gede itu nggak ngaruh sama hasil fotonya, tapi lebih ke sensor foto. It's hard to imagine doing long exposure photography without professional equipment, since the gear you're shooting with needs to be very still for some time. Bueno, la verdad es que muchas personas están cambiando sus cámaras de DSLR a los celulares porque les está facilitando muchísimo el flujo de trabajo. Realme es un aliado tanto para fotógrafos como para fans de la fotografía. Realme 9 Pro series, we encourage the youth to chase their dreams with hope in their hearts, even when there seems darkness all around. I'm happy to be a part of the Realme camera optimization program, testing the equipment that supports the creative process and helps to achieve beautiful photographs in the full range of lighting scenarios. Why are flagship cameras better at low-light photography? They have bigger sensors, better image stabilization, and more intelligent noise reduction algorithms. With the goal of bringing you a flagship experience, the Realme 9 Pro Plus is the first smartphone from Realme to include our ProLight imaging technology. The bigger the sensor, the more light intake.
the more image information. We use the huge Sony IMX766 imaging sensor to capture more light, while its built-in optical image stabilization keeps images sharp. Pro Light imaging technology includes realme's AI noise reduction engine 3.0, developed specifically to intelligently reduce image noise. This combination of powerful hardware and innovative software is the perfect representation of making flagship technology accessible to all, that is in sync with our core value, dare to live. Magnum photographer Trent Park knows it all about capturing the light and how important it is to photography. With photography being a modern form of expression, we include a ton of amazing photography features to bring our street photography to the next level. Perhaps the most obvious was the introduction of the world's first street photography mode on Realme GT Master Edition. By making street photography easier, it's changed the way our fans capture everyday moments. Here are some of my favorite shots from our fans using street photography mode. Every shot here has a story of its own. It is no surprise that street photography mode is one of our most used camera features. And today we are ready to introduce the next iteration of street photography mode. This is street photography mode 2.0. Our aim is to make street photography as fluid and natural as possible. Making it so simple to do, you can focus on capturing that shot, not on operating the camera. You might have tried taking long exposure photos before, but taking long exposures is not easy. That's because of two limiting factors: keeping the smartphone steady over a long period of time, and knowing how long to actually take the long exposure for. So this time around, we are introducing Smart Long Exposure. Smart Long Exposure comes with 4 different modes, each with a unique look and feel. Let's take a look at each of them. Rush Hour lets you keep your subject in focus while blurring the passing crowds. Neon Trail is great for capturing nighttime landscapes with the passing lights. Light Trail is perfect if you have a subject and want to capture those trail lights passing by. And we have also included a dedicated light painting mode, specifically designed for creative photography like this. With Smart Long Exposure, you no longer need to worry how to take a shot. By simplifying the process, 9 Pro Plus lets you take fantastic shots you will want to share right out of the camera. Let me show you just how easy it is. Isn't that cool? Now, as we share our photos more and more on social media platforms, the use of filters has essentially become second nature. This is why we've included 3 street photography filters in Street Photography Mode 1.0. Each of these filters are designed to help add that classic analog look to your shots. For Street Photography Mode 2.0, we have invited our Realme fans to collaborate with us in creating a filter that encapsulates the Realme style. And this is the filter you chose. We are calling it 90s Pop. It is perfectly suited for both street photography and everyday snapshots. 90s Pop is designed to enhance the saturation and contrast to evoke the vintage hues of the 90s. Now, we have a new feature for the pros, Pick and Zoom. Pick and Zoom gives you more control over your creation when shooting on the streets. You can now tap and move left or right for focus picking, move up or down to zoom in or out. That means you can zoom and focus precisely on the subject of your choice
all with one button. So this is the street photography mode 2.0. What's exciting is that we have made street photography simpler with each iteration, so that everyone can capture that decisive moment right on their phone without needing to be a photography expert. The 9 Pro Plus camera system also comes with a 119-degree super wide camera to enable you to be more creative by capturing more. And with a 4cm micro camera, you can go in real close and capture something different that otherwise be missed by our naked eyes. In short, Realme 9 Pro Plus features the most advanced flagship camera system in the history of Realme number series. We can't wait for you to try it out and show us what you can do with it. Let's take a few moments to talk about the selfie camera. This time around on 9 Pro Plus, we have supercharged our 16-megapixel selfie camera with Clear Fusion algorithm. With Clear Fusion, you can capture sharp and clear selfies no matter the lighting conditions. Clear Fusion uses AI algorithm to intelligently clean up image noise and sharpen the overall image so that your selfies are instantaneously shareable. I don't know about you, but sometimes I find it hard to get everyone in focus when taking a group selfie. This is why with multi-facial smart focusing, 9 Pro Plus is able to keep everyone in the frame focused, capturing sharp and clear group selfie every time. This is the new 9 Pro Plus camera system. Powered by our own ProLight imaging technology, we can now get incredible camera performance even in the most challenging lighting conditions. And with Street Photography Mode 2.0, capturing that perfect shot is easier than ever before. Now, let's take a look at the design. Color, material, and finish are a big part of what defines product design for us. Design is one of the first things you notice and can evoke an emotional response every time you use the phone. Our team at Realme Design Studio set out to create a fluid design that changes its appearance. We did a lot of experimenting with glass to deliver what we believe is our boldest design to date. This time around, we invited our Realme fans from 9 countries to share with us sunrise photos as a source of inspiration for the 9 Pro Plus design. See what we did there? 9 countries, 9 Pro Plus. Inspired by sunrise, we call this light shift design. When exposed to sunlight, Realme 9 Pro Plus magically changes color from light blue to red, just like the sky from dusk to dawn. Taking it back to indoors, it changes back to blue. It's like having 2 colors on one phone. Months of work, trial and error, and lots of fine-tuning went into creating the light shift design. It was a very complex process to get it just right. The light shift design composed of multiple layers to achieve this magical color changing effect, where each layer contains different material to receive and diffuse incoming lights. And I want to bring your attention to the top layer, that is the photochromic layer. When exposed to sunlight, trillions of photochromic molecules begin to change their structure. This reaction is what causes the color to shift from one shade to another. But the biggest challenge we had was to create a light-responsive technology that maintains strong color tones. Notably, we have implemented industry-leading dual-layer chromic bonding process to integrate photochromic layers seamlessly into the back panel of Realme 9 Pro Plus. Let's see how this works. The dual-layer chromic bonding process uses reinforced particle gel to strengthen the bond between the photochromic layer and the glass, creating a consistent, smooth calibration across the back panel. After the chromic bonding process is complete, the overall color tone will improve by a massive 40% as compared to a single-layer chromic process. To further enhance the effect, we have included a dazzling hybrid stardust layering into the light shift design. For the body itself, to ensure it feels comfortable and secure in your hand, we designed a 3D curved glass rear panel with a 47-degree profile. And the design blends seamlessly with the camera housing, thanks to the use of complementary color tones and sleek metal camera rings. Because the 9 Pro Plus is extremely thin at just 7.99mm, it feels comfortable to hold and feels light in the hand. In fact, this is the slimmest design ever in Realme number series.
So, how do you like the light shift design? The light shift design not only replicates the beauty of the sunrise, but the technology behind is what makes the Realme 9 Pro Plus worth celebrating. In short, this is our most forward-thinking design just yet. Let's take another look at the design in action. From ordinary to extraordinary, there's a long way to cross. Whenever we lose our way, there's always a light that keeps us going. The light sparks from every young heart. It leads us to capture inspiration in ordinary days. It encourages us to seize the colors of sunrises after the darkest hours and create something amazing with it. We brought the magical color-changing effect to life thanks to a dual-layer chromic bonding process. Place the back cover under the light for just a moment and you'll see it go from a calming blue to a passionate red, just like the color changing of the sky during sunrise. Presented by realme Design Studio. A tribute to those who dare to capture the light. Realme 9 Pro Series. This is the Sunrise Blue featuring the all-new light shift design. In addition to Sunrise Blue, we are also releasing 2 more colors for the minimalist out there. A luxurious Aurora Green. Now, let's talk about display. For the 9 Pro Plus, we've included a 6.4-inch Super AMOLED display with a peak brightness of 1000 nits. For the gamers out there, touch sampling rate is especially important. This is why we've increased the touch sampling rate to 360 Hz for a responsive gaming experience. The display is as smart as it is beautiful. The 90 Hz display intelligently adapts its refresh rate between 60 Hz and 90 Hz depending on what's on the screen. This time around, we have also pushed the display technology further by including an in-display fingerprint sensor for faster, more natural unlocking. And we have doubled down on the technology by integrating a heart rate monitor, allowing you to check your heart rate anytime, anywhere. 9 Pro Plus is not just visually stunning, you'll also love how it sounds. Perfect for video calls or enjoying music by the pool, our dual stereo speakers are powered by Dolby Atmos for a more stunning and richer sound. And we are all about giving you more. So the 9 Pro Plus comes with a 3.5mm headphone jack. Just in case you are wondering, no additional adapters required. The Realme 9 Pro Plus is also high-res certified, so you can enjoy music just as the artist intended it to be heard. We have also paid additional details into areas you might never see, but you can certainly feel. For 9 Pro Plus, we have improved the haptic with X-axis linear motor. That means now we can get a stronger, more responsive feedback. All in all, the restrained elegance of Realme 9 Pro Plus, combining with a 90 Hz Super AMOLED display and dual stereo speakers, reimagine what smartphone design could be. We are sure you will love how 9 Pro Plus looks and sounds. Now, let's talk about performance. The processor powering the Realme 9 Pro Plus is the amazing Dimensity 920 5G from MediaTek. This is a state-of-the-art processor that delivers far better performance and power efficiency than the Realme 8 Pro. At its foundation, the Dimensity 920 enables flagship-level performance using 6nm technology with an octa-core setup. Thanks to the 2 A78 Prime cores and the Mali G68 GPU, 9 Pro Plus glides through demanding apps smoothly and efficiently. 9 Pro Plus further improves its performance with vapor chamber cooling system. This cooling system features a 5-layer cooling structure with industry-leading vapor chamber size, covering 100% of heat source components for effective heat dissipation at up to 10 degrees Celsius core area temperature reduction. This means 9 Pro Plus is able to push the processor to work harder for longer and still get outstanding performance and stability without overheating.
Keeping your phone at the optimal temperature is also important for the battery. The vapor chamber cooling system also keeps your battery cool too, optimizing its battery life. With that in mind, we pack a massive 4500 mAh battery into its super thin body, giving you a full day use on a single charge. But just in case you do need to top up, we got you covered with our signature 60-watt super dark charging, giving you 50% charge in just 15 minutes. To improve app responsiveness even further, 9 Pro Plus is supercharged with dynamic RAM expansion technology, adding an additional 5GB of virtual RAM. So now you can switch between apps instantaneously. 5G connectivities give you super fast downloads and uploads with lower latency on the fly. And with 9 Pro Plus, we have enabled dual 5G SIM support. So we can have two 5G SIM cards running simultaneously, one for data and one for phone calls if you want. 9 Pro Plus also supports Wi-Fi 6. You can expect the download speed at up to 40% faster than its previous generation. So no matter where you are, you can enjoy the smoothest and fastest connection possible. In terms of software, the 9 Pro Plus will be running on realme UI 3.0 right out of the box. And in case you are wondering, realme UI 3.0 is based on the latest Android S. Our engineering teams at Realme are committed to another 2 years of major Android OS updates. That means your Realme 9 Pro Plus can get access to the latest innovations from Google and Realme, and your phone will run as smooth as the day you bought it. So that's performance. We have packed 9 Pro Plus with class-leading 5G processor, supercharged with vapor chamber cooling system and dynamic RAM expansion for fluid experience. More importantly, you can be sure your 9 Pro Plus stays up to date with 2 years of Android OS updates. So that's the all-new Realme 9 Pro Plus. There are also a lot of new additions to this generation. So much we could hardly fit it all on this one screen. We have put everything we have learned about making a great camera into 9 Pro Plus. This is the best representation of our vision of mobile photography. We can't wait for you to get your hands on. सरकार और भाई फाइनली हम लोग Realme की तरफ से भी कोई बैंगर किस्म का जो मोबाइल फोन है ना वो देख रहे हैं और Realme ने रमजान के अंदर बेसिकली ये जो बॉक्स है ये हमें भिजवाया है। मुझे पता है कि इसके अंदर Realme का लेटेस्ट फोन मौजूद है और मजेदार बात ये है कि ये Realme की ऑलमोस्ट फ्लैगशिप सीरीज का फोन है, तो उस वजह से भी मैं इस फोन के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पर रमजान मुबारक लिखा हुआ है। Realme याऊ जो है ना वो इस बार वैसे तो येलो होता है लेकिन अब ब्लू हुआ है, आई थिंक रमज़ान की वजह से। साइड पर भी रमजान मुबारक लिखा हुआ है और नीचे वाली साइड पर जो बॉक्स है उस पर डेयर टू लीप लिखा हुआ है। और अगर आप ये देख रहे हैं कि ये बॉक्स जो है ये ब्लू है लेकिन ये अलग अलग कलर मार रहा है डिफरेंट एंगल से, तो इसके अंदर भी एक ईस्टर एग दिया गया है क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन इस डब्बे के अंदर मौजूद है या एटलीस्ट मुझे लगता है कि मौजूद है वो Realme का Realme 9 Pro Plus है। उस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड हम बात करेंगे। खैर इस डब्बे को पहले निपटा लेते हैं। यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर क्या मिलता है भाई, यहाँ पर कुछ स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं और अगेन ये Realme के रमज़ान एक्सक्लूसिव स्टिकर्स हैं जो कि मुझे नहीं क्लियर कि आपको मिलेंगे या नहीं, लेकिन मुझे ज़रूर मिल रहे हैं। तो या लेकिन चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पर ईद मुबारक लिखा हुआ है, रमज़ान वाइब्स लिखा हुआ है, ईद शॉपिंग लिखा हुआ है और मुझे खुशी ये हो रही है कि इस तरह की चीज़ें हम लोग देखते थे लेकिन जनरली हम लोग ईद के रिलेटेड नहीं देखते थे। डिफरेंट जो होते हैं त्यौहार जो दूसरे मुल्कों में मनाए जाते हैं उनके हिसाब से तो ये चीज़ें होती थी, बट अच्छा लग रहा है कि Realme ने इनिशिएटिव लिया है और इसको यहाँ पर हमें प्रोवाइड किया है। यहाँ पर ये बॉक्स है ओके भाई, तो ये जो बॉक्स है आई थिंक ये मोबाइल फ़ोन का बॉक्स है क्योंकि इसका जो साइज़ है एग्जैक्टली वैसा ही है और इस बॉक्स के अंदर हमें Realme 9 Pro Plus का जो डब्बा है वो देखने को मिल जाता है। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ और उसके अलावा ये बॉक्स मौजूद है जिसके अंदर क्या है वो हम देख लेते हैं। अगेन ये भी वो साइकेडेलिक किस्म की जो लुक है वो दे रहा है। Realme इसको लाइट शिफ्ट डिज़ाइन कहती है
लेकिन मैं इसको ग्रेडियंट भी कहना चाहूँगा आसान बोलने के लिए। यहाँ पर भी हमें एक रियल मी आओ जो है वो देखने को मिल जाता है। मेरे पास वो बड़े वाला रियल मी आओ पड़ा हुआ है और अब ये रमज़ान एडिशन वाला जो है भाई ये भी हमें रिसीव हो गया है। इसको खोलना कहाँ से है? ओके यार, जनरली हम मोबाइल फोन की बिल्ड क्वालिटीज की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रखी है। नीचे जो बेस है काफ़ी सॉलिड है और इसकी जो लुक है वो भी काफ़ी डिसेंट है। खैर, हम रियल मी आओ से बाहर निकलते हैं और चलते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन की तरफ, जो कि है Realme 9 Pro Plus। अब ये Realme की नंबर सीरीज़ का फ़ोन है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि Realme इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी, और एक्साइटेड होने की रीज़न ये भी है कि Realme की जो नंबर सीरीज़ है वो Realme की मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ में भी आ जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 9 Pro Plus है ये Realme के लिए पहली बार है कि Realme अपनी नंबर सीरीज़ के अंदर एक प्लस मॉडल लॉन्च कर रही है। और इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि बेसिकली Realme की जो X सीरीज़ आया करती थी ना, आप समझे कि मुझे ये लगता है कि ये पाकिस्तानी मार्केट में उसकी जगह जो है वो अडॉप्ट करेगा। अब ऑब्वियसली ये Realme ऑफिशियली नहीं कह रही, दीज आर माय ओपिनियन, लेकिन अगर आप इस फ़ोन की पोजीशनिंग की बात करते हैं ना, या आप मुझसे पूछते हैं कि बिलाल भाई ये किस बंदे के लिए बना हुआ है, तो वो बंदा जो Realme की X सीरीज़ खरीदता है ये मोबाइल फ़ोन उसके लिए हो सकता है। और ये इसी वजह से ऑलमोस्ट एक फ्लैगशिप फ़ोन भी है। यहाँ पर सामने की तरफ आप देख सकते हैं 5G को मेंशन किया गया है। जितने भी लेटेस्ट फोन्स आ रहे हैं वो 5G के साथ आ रहे हैं, और यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया है। बैक साइड पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको Sony IMX766 का जो सेंसर है वो देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल फोन के अंदर जो मेन कैमरा लगाया गया है वो 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मोबाइल फोन का जो मेन कैमरा है वो फ्लैगशिप ग्रेड है। अब जनरली हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि मिड रेंज फोन्स के अंदर अगर कोई कंपनी फ़ोन बना रही होती है तो वो प्रोसेसर लगा देती है फ्लैगशिप लेवल का, अगर उन्हें बहुत ही कोई कमाल करना हो, और कैमराज हमेशा ही हमें मिड रेंज में नॉर्मली देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट कुछ फ्लैगशिप फोन्स भी लो एंड कैमराज के साथ आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा किया गया है। यहाँ पर जो सारा फोकस है ना वो इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा पर रखा गया है, और यही वजह है कि आपको एक फ्लैगशिप ग्रेड का जो कैमरा है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर प्रोसेसर भी काफ़ी सॉलिड लगाया गया है, जो कि Dimensity 920 5G चिपसेट है, और Dimensity 920 सीरीज़ जो है ये हमने एक दो फोन्स के ऊपर पहले भी ट्राई आउट की है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये लेटेस्ट जनरेशन की चिपसेट है, जिसकी वजह से इसका जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो भी 6 मिलीमीटर वाला है, और ये 5G को भी सपोर्ट करती है। इसके अलावा यहाँ पर 60 वॉट की सुपर डार्ट चार्जिंग जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है, और उसके अलावा 90 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले है वो मौजूद है, जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है। जो कलर हमारे पास मौजूद है इसका नाम है सनराइज ब्लू, और जो वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है उसका नाम नहीं, उसका साइज़, जो वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है वो 8 GB है। मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, अब आप लोगों का सवाल होगा कि इस वेरिएंट का प्राइस टैग क्या है। तो भाई प्राइस टैग जो है ना वो ऑफिशियल हमें पता लग चुका है, और इस मोबाइल फ़ोन का जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो होने वाला है 69,999। खैर, ये जो मोबाइल फ़ोन है काफ़ी यूनिक फीचर्स के साथ आता है, तो शायद उन चीज़ों को ये काफ़ी हद तक संभाल ले। बॉक्स के अंदर आपको एक बुकलेट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर कुछ पेपर वर्क है, और सिम इजेक्शन पिन जो है वो आपको देखने को मिल जाती है, और इसके अलावा आपको एक केस देखने को मिल रहा है। अब केस अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन केस है, और अगर आप इसकी लुक की बात करते हैं ना तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, बल्कि इसके अंदर हल्का सा जो ब्लैक कलर है वो आ रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा टिंट देगा फ़ोन को, और फ़ोन को अगर आप टिंट देंगे ना तब भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। फ़ोन को हम टर्न ऑन कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर जो सुपर डार्ट चार्जर है वो देखने को मिल जाता है, जो कि 65 वॉट के ऊपर फ़ोन को चार्ज कर सकता है, लेकिन ये जो फ़ोन है 60 वॉट सपोर्ट करता है। तो चार्जर 65 वॉट का है, फ़ोन की जो सपोर्टेड रेटिंग है वो 60 वॉट्स है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक केबल देखने को मिल जाती है, जो कि USB Type-C to USB A वाली है। तो बेसिकली वही चार्जर जो कि आपके पहले Realme के फ़ोन्स को 65 वॉट का जो चार्जर आता था वही चार्जर यहाँ पर मौजूद है, और इंटरचेंजेबली यूज़ भी होगा, और बॉक्स के अंदर ही आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो सनराइज ब्लू कलर है भाई, मैं कह रहा था ना कि ये हिलाएगा आपको। बाय द वे, आपको इस रैपर के अंदर से फ़ोन का कलर जो है ना वो बड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। जैसे ही मैं इसको ड्रैग आउट करूँगा ना तो आपको समझ आएगी कि मैं क्या बात कर रहा था। आप इस कलर को देख सकते हैं, इसकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, और बहुत ज़्यादा इन द फेस भी है। ये भी बात मैं कहूँगा कि इसकी जो लुक है ना वो दूर से बताती है कि भैया आपने कोई चीज़ जो है ना वो परचेज़ की और आप दिखाना चाह रहे हैं। वो स्पोर्ट्स कार होती है ना जिनको आप येलो कलर में, रेड कलर में, या किसी भी ऐसे ऑड कलर में ख़रीदते हैं ताकि सबको पता लगे कि आपने कोई चीज़ ऐसी ख़रीदी है। इसका जो लुक है वो वैसा ही दिया गया है भाई। और बैक साइड जो है मैं इसको चेक करना चाहूँगा कि ये प्लास्टिक है या ग्लास है। ओके, इंटरेस्टिंगली बैक साइड के ऊपर भी आपको ग्लास की जो प्रोटेक्शन है वो देखने को मिल जाती है। इस पर कोई स्क्रैच जो है वो नहीं आ रहा,
तो आप इसके ऊपर बेशक सीधा कटर भी मार लें, इस पर स्क्रैच नहीं पड़ने वाला क्योंकि बैक साइड पर भी ग्लास है। और यहाँ पर जो डिज़ाइन है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसको सनराइज ब्लू कहा जा रहा है। दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको शायद नजर ना आए, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स भी हैं और ये करीब से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में तारे नहीं होते, उस तरह की जो लुक है वो प्रोवाइड करता है। जब आप इसको मूव करते हैं ना, तो वो जो पैटर्न है वो चेंज भी होता रहता है। इसके अलावा ये जो सनराइज ब्लू कलर है, इसके अंदर लाइट शिफ्ट डिज़ाइन भी मौजूद है, यानी कि जब आप इसको सूरज के अंदर लेकर जाएंगे तो ये अपना कलर चेंज कर लेगा और इसका जो कलर है वो ब्लू कलर से रेड कलर की तरफ चला जाता है। और जैसे ही आप वापस आते हैं नॉर्मल लाइट के अंदर, तो 2 से 5 मिनट के अंदर ही अपना कलर वापस शिफ्ट कर लेता है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर मौजूद है। बैक पर आपको आपका ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, जिसमें एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, 50 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर है जो कि IMX766 है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक मैक्रो लेंस जो है वो देखने को मिल जाता है जो कि साइड पे मौजूद है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है और सिर्फ हमने फ्लैगशिप ग्रेड के फोन्स पे देखी है, वो ये है कि इसका जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल वाला, वो OIS सपोर्टेड भी है। तो मैं इस सब चीज़ को टेस्ट करने वाला हूँ। ऊपर वाली साइड पर माइक के पोर्ट है, नीचे वाली साइड पर टाइप C की पोर्ट है, साइड पर आपको आपकी जो सिम की स्लॉट है वो देखने को मिल जाती है। और इसको हम चेकआउट कर लेते हैं कि इसके अंदर सिम सिचुएशन क्या रहने वाली है। और उसके बाद मैं मोबाइल फ़ोन को सेटअप करूंगा और सेटअप करने के बाद दिखाऊंगा कि फ़ोन कैसा है। वैसे सिम स्लॉट जो है वो यहाँ पर एक ड्यूल स्लॉट दी गई है और इसके अंदर मेमोरी कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आपको उसी स्टोरेज पे गुजारा करना पड़ेगा जो कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको ये मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड कर रहा है। फ़ोन को सेटअप करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं और देखते हैं कि फ़ोन कैसा है। ओके भाई, तो यहाँ पर फोन को हमने फाइनली रेडी कर लिया है और सबसे पहली चीज जो कि आप लोग नोटिस करेंगे इस मोबाइल फोन के बारे में, उसका डिस्प्ले होने वाला है। यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो एमोलेड डिस्प्ले है और यहाँ पर 90 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो भी दिया गया है। एक चीज जो कि हमने देखा है कि पहले मोबाइल फोन में इंट्रोड्यूस की गई और बाद में ज्यादातर मोबाइल फोन से निकाली गई है, वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। ज्यादातर एमोलेड फोन्स भी आजकल जो आ रहे हैं उनके फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड पर दिए जा रहे हैं, क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आई थिंक महंगे होते हैं, या आई डोंट नो एक्जैक्टली रीजन क्या है, लेकिन इस मोबाइल फोन के अंदर एटलीस्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को इंक्लूड किया गया है और वो भी एक अच्छी क्वालिटी का जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो है। इसके अलावा फ्रंट कैमरा जो है वो पंच होल के अंदर मौजूद है और ये 16 मेगापिक्सल्स की रेजोल्यूशन के साथ आता है। यहाँ पर अगर आप पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं तो यार ये रियलमी का फोन है और रियलमी का भी हायर एंड फोन है, तो यहाँ पर आप लोग जो पिक्चर क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो काफी अच्छी है और यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी अच्छी निकल कर भी आती है। जो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है और यहाँ पर हमने बैक कैमरा को भी टेस्ट आउट किया है और आई वुड से कि यार वही चीज़ ये प्रोवाइड करता है जो कि आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है उसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छी है और ओवरऑल जो कैमरा की क्वालिटी है उससे मैं मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड हूँ। मैं इस मोबाइल फ़ोन का मुकम्मल रिव्यू करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं इसके कैमरा के ऊपर आपको ज़्यादा डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करूँगा। अभी के लिए ये बता सकता हूँ कि इसका जो पोर्ट्रेट मोड है वो बैक कैमरा के ऊपर काफ़ी सॉलिड काम कर रहा है और एक चीज़ जो कि हैरानकुन है वो ये है कि इवन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इसका जो पोर्ट्रेट मोड है उसकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। फीचर सेट की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको नाइट मोड देखने को मिल जाता है जो कि फ्रंट और बैक दोनों कैमरास पे अवेलेबल है और बैक पर भी ये आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा स्ट्रीट मोड अवेलेबल है जो कि अगेन बैक के दोनों कैमरास पे अवेलेबल है, तो आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यूज़ करें या मेन कैमरा, दोनों पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। वीडियो मोड की अगर आप बात करते हैं तो क्योंकि इसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मौजूद है, तो अगर आप कोई भी स्टेबलाइजेशन ऑन नहीं करते तब भी आपकी जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की निकल कर आ जाएगी और उसके अंदर स्टेबलाइजेशन मौजूद होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप EIS और OIS दोनों को ऑन कर सकते हैं और उसको अल्ट्रा स्टडी मोड ये कहता है। अब अल्ट्रा स्टडी मोड के अंदर ये बहुत ज़्यादा जूम इन कर लेता है क्योंकि ये दोनों ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और EIS को यूज़ कर रहा होता है, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर AI की फैसिलिटी भी दी गई है, तो आप AI के थ्रू जो अपनी वीडियो है उसको एनहांस कर सकते हैं और इसके अंदर आप वीडियो के अंदर मेकअप वगैरह भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी अवेलेबल है। और वीडियो मोड के अंदर भी आपको बैकग्राउंड ब्लर की जो फैसिलिटी है वो देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर आप इसको ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वीडियो रेजोल्यूशन है वो 720p पे चली जाती है और वैसे ये मैक्सिमम 4K रेजोल्यूशन तक को सपोर्ट करता है। तो अगर आप नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं 4K में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्यूटी फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करेंगे तो आपकी रेजोल्यूशन थोड़ी नीचे जाती है। फोटो मोड इसमें है, उसके अलावा पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का मोड दिया गया है जो कि बेसिकली आपकी पिक्चर को स्ट्रेच करता है, क्योंकि यहाँ पर जो बैक पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल रिजल्ट्स नहीं देता, वो उन रिजल्ट्स को बेसिकली इंटरपोलेशन के लिए यूज़ करता है। तो अगर आप 50 मेगापिक्सल का रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो ये मल्टीपल पिक्चर्स लेगा और आपको 50 मेगापिक्सल का जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा टिल्ट शिफ्ट मोड और स्टारी मोड जो कि हमने इससे पहले रियलमी GT ME के ऊपर देखे थे वो भी इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा के अंदर अवेलेबल हैं।
कैमरा के अलावा जो चीज़ इस मोबाइल फ़ोन की बहुत ज़्यादा यूनिक है वो इसकी डिज़ाइन और इसकी बिल्ड क्वालिटी है। इस मोबाइल फ़ोन के बैक पर भी ग्लास दिया गया है और ये जो ग्लास है ये कलर चेंजिंग ग्लास है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अगर आप इसको सूरज के अंदर लेकर जाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके रेड वाली साइड पे चला जाता है। अगर आप उस चीज़ को तेज़ करना चाहते हैं तो आप यूवी लाइट इसके करीब लेकर आ सकते हैं और ये आपको रिजल्ट जो है वो शो अप कर देगा। एज फार एज द इंटरनल्स एंड द परफॉर्मेंस इज कंसर्न, तो यहाँ पर आपको डायमेंसिटी 920 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि इससे पहले हम 1-2 फोन्स पे देख चुके हैं। और अगर आप उसके Antutu स्कोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने Antutu को भी रन किया है और ये तकरीबन 4.5 लाख का स्कोर जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर सारे सेंसर्स वगैरह भी लगाए गए हैं। इसके अंदर जायरोस्कोपिक सेंसर भी अवेलेबल है। PUBG के अंदर ये आपको HDR के ऊपर अल्ट्रा फ्रेम रेट प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर अल्ट्रा HD की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जो कि इसके प्राइस रेंज में जो कि 69999 आ जाती है उस रेंज में बहुत ज़्यादा सॉलिड है और इस रेंज में हम यही परफॉर्मेंस जो है वो हर फ़ोन से एक्सपेक्ट करते हैं। अदर दैट यार मोबाइल फ़ोन के अंदर स्टेरियो स्पीकर्स का पेयर भी लगाया गया है, तो नीचे वाली साइड पर स्पीकर्स दिए गए हैं और ऊपर वाला जो ईयर पीस है उसके अंदर भी स्पीकर दिए गए हैं, तो उस साइड से भी आपको काफ़ी लाउड साउंड जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ओवरऑल मोबाइल फ़ोन की जो हैंड ग्रिप और फील है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। इस मोबाइल फ़ोन के अगर आप प्री ऑर्डर्स की बात करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन का प्री ऑर्डर जो है वो 18 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद 25 अप्रैल से इसकी जो पहली सेल है वो स्टार्ट हो रही है। मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, ये फ़ोन आपको कैसा लगा है। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। Hi, my name is Julius. I'm the co-founder and creative director of Heliot Emile and a guest designer at realme Design Studios. My name is Victor. I am the co-founder and business director of Heliot Emile. Heliot Emile was founded by Victor and I. We work a lot with combining form and function in our design. We work here in our beautiful studios in Copenhagen, Denmark. This season we partnered with realme. I feel like it's a perfect match since we both cater to a young audience through innovation. So we came up with this chest strap bag, and what we also did was we integrated the customized trimmings in this bag, so it really speaks the industrial elegance of Heliot Emile. We were very inspired by the light shift design and the fact that the light can change the visual look of the phone was very, very unique and very, very cool. We really like to document the process of when we design. So this season, Heliot Emile is showing their collection during Paris Fashion Week. So we're going to present the entire collaboration in the bag on the official runway. So the models are going to wear the bag, and we're super excited to integrate technology and fashion in the runway show. We're super excited to partner with realme, and to see this collaboration come to life is very exciting for us.